Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. Today in this video, I will discuss the important terms that is related to medical microbiology. If you are a microbiology student and you are studying medical microbiology, or if you are an MBBS student and there is a course that is related to medical microbiology, so I have gathered some terms that are related to these medical microbiology. You must watch this video because these terms are basically interconnected with each other, and most of the students face they face confusion in these terms, that what is the basic difference between these medical terms. Okay, so I have gathered different terms that is related to this field. So when you watch this video till the end, I think I have prepared two parts of this lecture. Okay, part one and part two. So in the first part, there are some terms, and also in the second part, there are also many terms. So I have divided this video into two parts. Okay, so watch these two parts. So after watching this, you will then clarify your questions, and you will also differentiate between these terms that that are interconnected with each other. Okay, so let's start with the video. Okay, the first is the parasite. Basically, when starting medical microbiology, so you will come across this word parasite. So what is parasite? So parasite, in mostly we have studied about that what is parasite, that any microorganism that or organism that feed on a host that is in life form. Okay, parasite are those organisms that live on or within a host organism and are metabolically dependent on the host. इसका मतलब ये है कि वो ऐसे पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उस होस्ट पे फीड करते हैं जो वो जिंदा हो. बेसिक definition ये है, it feed on the host that is alive and they are using the nutrients of their host. Okay, so this is known as parasite. फिर क्वेश्चन आता है कि जो पैरासाइट्स हैं अक्सर जो हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो पैरासाइटोलॉजी में जो अलग सा सब्जेक्ट होता है पैरासाइटोलॉजी में, तो उसमें हम ज़्यादातर प्रोटोजोन्स और वॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो आप जहन में याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर दैट पैरासाइट आर बेसिकली, अगर आपसे कोई पूछे कि either bacteria are parasites or fungi are parasites, तो your answer will be yes, कि जो हमारे साथ बैक्टीरिया है और फंजाई है, मोल्ड्स है, ये सारे जो है ये पैरासाइट्स है. ठीक है, क्योंकि दे आर फीडिंग ऑन द होस्ट एंड द होस्ट इज अलाइव. ठीक है, हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में जब एक इन्फेक्शन कॉज होता है तो ये इसी बैक्टीरिया और फंजाई और मोल्ड्स की वजह से कॉज होता है. ठीक है, तो क्या हो जाता है, हम जिंदा होते हैं और वो हमारे अंदर फीडिंग करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे इस्तेमाल करते हैं, दे आर जो इन्फेक्शन है वो कॉज करते रहते हैं, दे आर रिप्रोड्यूसिंग. ठीक है, तो हमेशा याद रखें पैरासाइट हमारे साथ बैक्टीरिया भी पैरासाइट है, फंजाई भी पैरासाइट है, मोल्ड्स भी पैरासाइट है. ठीक है, ये सारे पैरासाइट है क्योंकि हम जिंदा होते हैं या अदर होस्ट जिंदा होते हैं और वो हम पे फीड करते हैं. ठीक है, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि पैरासाइट सिर्फ वॉर्म्स और प्रोटोजोन्स होते हैं. ठीक है, अक्सर हम पैरासाइटोलॉजी में उसी को स्टडी करते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना. What is ectoparasite? So as the name indicates that these parasites feed on the host or outside their body. Okay, ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी, जो हमारा जो बॉडी के ऊपर ये अक्सर सरवाइव करते हैं और ये हम ह्यूमन से या एनिमल से ब्लड सक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लीचीज ले लें, लीचीज एंड और टिक्स जो है, जो एनिमल्स में आपने अक्सर देखा होगा उसके स्किन पे अक्सर चिपके होते हैं, दे आर मोस्टली अटैच्ड टू द स्किन ऑफ द एनिमल्स.
If we consider our that lice that is present in our hairs, so that are also ectoparasites. Okay, so these are mostly present outside the body. And what is endoparasites? So as the name indicates, they lives inside our body. And there are many examples of endoparasite like worms and protozoans and bacteria. These all are endoparasites. Okay. Okay. Now we come to the host. There are different types of host: final host, intermediate host, transfer host, reservoir host. So I will differentiate I will explain that what is the difference between these hosts with examples. Okay. So what is final host? So keep this in mind. Final host is also known as definitive host. Okay. We all know that there is a certain life cycle of microorganism. Okay. And different microorganism produces their gametes. Okay. If we look to the worms, okay, so the worms produces their gametes, and after that after producing their gametes, they interconnect with each other, and then a new organism came into being. So basically, the type of final host or definitive host is that type of host where the microorganism produces their gametes. Okay, or we can say sexual maturity. जब उस होस्ट के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी सेक्सुअल मेच्योरिटी शो करती है, ठीक है, and it produces their gametes, and so that host is known as the definitive host or final host of that microorganism. If I give you an example, so if you have I think you have heard about the Toxoplasma gondii. So Toxoplasma gondii is a type of worm. Okay, and it is the definitive host or the final host of that worm is the cat family members. Okay, so it only produces its gametes in the cat family members. Okay, mostly in the cat. So okay, so the cats are the final host or the definitive host of that Toxoplasma gondii. Okay, what is intermediate host? So a host that serves as a temporary but essential environment for some stages of development is an intermediate host. वो होस्ट जो जहन में याद रखें, उसमें इस होस्ट में, इंटरमीडिएट होस्ट में कोई गेमीट्स प्रोडक्शन नहीं होगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेमीट प्रोडक्शन नहीं करेगा, लेकिन अपने लाइफ साइकिल के कुछ जो स्टेजेस है वो इस इंटरमीडिएट होस्ट में कंप्लीट करेगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अगेन टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, सो वो तो जो गेमीट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, in the cat family members. After that they are released into the environment, and if they are inhaled or ingested by the humans, so then that life cycle continues, and there are different stages of that worms is produced in the humans. Okay, different stages वो परफॉर्म करता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाता है, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर और इन्फेक्शन कॉज करता है. तो ह्यूमन बीइंग्स आर कंसिडर एज द intermediate host of that microorganism or that worm. Okay, so keep this in mind. There is no sexual maturity in the intermediate host. Transfer host. What is transfer host? So it is not necessary for the completion of the organism life cycle, but is used as a vehicle for reaching a final host. For example, अगर मैं आपको example दे दूँ, the Anopheles mosquito, जो Anopheles mosquito है वो मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसफर करता है बिटवीन द जो humans that are infected by the malarial parasite with the help of the Anopheles mosquito. वो Anopheles mosquito के अंदर वो पैरासाइट होता है, ठीक है, वो प्रोटोजोन होते हैं, मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं, और वो होस्ट में ह्यूमन बीइंग में इंजेक्ट करते हैं. So that Anopheles mosquito is acting as a transfer host for that malarial parasite. Okay, so keep this thing in mind. Any host that transfer the microorganism between different hosts, so that is known as a transfer host. Okay, what is a reservoir host? So it simply means, for example, you are infected. Okay, a human being is infected. For example, he is infected with the just name different certain infection. We can say mycobacterium tuberculosis.
Okay, a person is infected with the mycobacterium tuberculosis, and he is producing large amount of TB bacteria inside his chest. Okay, so when he is coughing, so he is releasing that mycobacterium tuberculosis into the environment, and the other people are inhaling it, and also they are getting infected. Okay, so the person that is that he is coughing and he is releasing that microorganism, so he is known as the reservoir host. Okay, so keep this thing in mind. Okay, so these were about the host. So I think you can now differentiate between the host. Okay, what is an infection? Most people say that he is having a parasitic infection or the bacterial infection. So what is infection? When a parasite, or in simply when a bacteria or a microorganism is actively growing and multiplying inside your body, so this is known as infection. Okay, जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में जो है एक्टिवली डिवीजन करता है और मल्टीप्लिकेशन करता है, so this is known as infection. And what is the infectious disease? So because of that infection, our most body parts are then acting in abnormal way. Okay, for example, we have get an God forbid, we have get an infection of mycobacterium tuberculosis, and then after that it is dividing, actively dividing inside our lungs. Okay, so after that after the very high amount of division and how high population of that TB mycobacterium tuberculosis, so our lungs then fail to fail to function properly. So that stage is known as infectious disease. So that tuberculosis is known as the infectious disease, because of that infection, our lungs have failed to perform its active function. Okay, so this is known as an infectious disease. Okay, so keep this thing in mind. Okay, what is a pathogen? Okay, what is a pathogen? So keep this in mind that any microorganism that are creating any organism that is creating disease inside your body is known as pathogen. Okay, and what is pathogenicity? So its ability to cause disease is called pathogenicity. The high the ability to cause disease, the high is the pathogenicity rate. Okay, if we compare two microorganism, for example, again I'm saying that mycobacterium tuberculosis, or we can say salmonella typhi, that is causing typhoid. Okay, so I think the pathogenicity of the mycobacterium tuberculosis is a bit higher than the salmonella typhi. Okay, so this is known as pathogenicity, the ability to cause diseases. Okay, okay, what is primary pathogen, or we can say frank pathogen? So for example, I will explain this primary pathogen in a simple way, in an example. Okay, for example, you are a healthy person, and you come in contact with a very pathogenic bacteria for the first time, or for the second time or the third time, it does not matter. But if you come in contact with that microorganism, and you and there an infection, there is an infection, and you witness an infectious disease. Okay, I mean that you are a healthy person, and a microorganism come in contact with you, and it starts division inside your body. Okay, so that is known as the primary pathogen. Okay, is any organism that causes disease in a healthy host by direct interaction is known as a primary pathogen. And what is opportunistic pathogen? So I'm explaining this opportunistic pathogen, so then you will come to know that what is the primary pathogen. Okay, so opportunistic pathogen, as the name indicates, that we all know that there are microbiota inside our body. Okay, हमारे body के अंदर normal flora होते हैं, ठीक है, different regions पे microflora होते हैं, and they are performing their function. Okay, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारे स्किन में, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, इवन इन द सर्विकल रीजन ऑफ द वुमेन, ये सारे जो है उधर एसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब उसको फॉर एग्जांपल हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो नॉर्मल फ्लोरा है वो प्रेजेंट है,
and there is also E. coli that is performing different essential function inside it. Okay, तो जब क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमें एक इंजरी हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है, और जो उस एक्सीडेंट और उस इंजरी ट्रॉमा की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है, वो हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, दैट दे एंटर्स इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम. सो जब वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं, सो दे कैन ट्रेवल इनसाइड आवर बॉडी टू डिफरेंट रीजन्स. तो क्या कर लेते हैं, जब वो डिफरेंट रीजन्स तक अपने आप को पहुंचा देते हैं, ठीक है, सो देयर दे कैन देन कॉज द डिजीज. ओके, उसका जो नॉर्मल पोजीशन था बॉडी में वो लार्ज इंटेस्टाइन था, उधर वो अपनी परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन जब उसकी प्लेस चेंज हो गई, ठीक है, और उसकी एनवायरनमेंट चेंज हो गई, तो वो एक्टिव हो गए और उसने इन्फेक्शन स्टार्ट कर ली डिफरेंट पोजीशंस पे, अदर पोजीशंस पे. So they are known as the opportunistic pathogens. Okay, or for example, another example I am telling you, for example, there is an there is a person that his immunity is strong. Okay, उसकी immunity strong है, लेकिन जब उसको एक इन्फेक्शन हो जाती है तो वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाते हैं, ठीक है. तो जब वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो उसके बाद जो उसके जो माइक्रोबायोटा है बॉडी में, तो उसको एक चांस मिल जाता है इन्फेक्शन कॉज करने में, क्योंकि व्हेन अ पर्सन इज हैविंग अ बेटर इम्यूनिटी, तो वो माइक्रोबायोटा जो है वो सप्रेस्ड होती है, वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकती. हमारे जो इम्यून सेल्स है उसको सप्रेस करते हैं, बस इसी हद तक रहते हैं कि वो अपना एक्टिविटी कर ले, और उसको जो है उसकी डिवीजन को रोकते हैं. लेकिन जब हमारा जो इम्यून सिस्टम वो कंप्रोमाइज हो जाता है, तो उसको एक चांस मिल जाता है और वो अपनी डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं. सो दिस इज आल्सो नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन. पहला प्राइमरी पैथोजन, इट डज नॉट नीड्स टू बी प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, वो बाहर से आ जाता है और हमें डिजीज कॉज कर लेता है. लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन हमारे बॉडी में रहते हैं, लेकिन जब एनवायरनमेंट उसको चेंज हो जाए और एक पर्सन इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उसको एक चांस मिल जाता है, एंड दे स्टार्ट dividing and they start creating infection and disease inside our body. So that is known as opportunistic pathogen. So I hope you have understand it now. Okay, okay. Now here come a very unique term, quiescent latency. Okay, I think some of the people will hear about this word, or even this word is new to many people, that what is quiescent latency. So first of all, I would explain it. Okay, after that I will read the text. Okay, आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने HIV वायरस को, या फॉर एग्जांपल उसकी एग्जांपल मैं बाद में दूंगा, varicella-zoster virus, okay, that cause chickenpox in the children. Okay, तो अक्सर चिल्ड्रन में जो बच्चे होते हैं उसमें जो वो अभी बच्चे होते हैं, तो उसमें चिकन पॉक्स जो है वो अपेयर हो जाता है. ओके, एंड आफ्टर दैट व्हेन इट इज इरेडिकेटेड, दैट चिकन पॉक्स जो है वो ख़त्म हो जाता है डिफरेंट मेडिकेशन के थ्रू. तो वो वायरस जो है वो उसके बॉडी में रहता है और बहुत ज़्यादा सालों तक उसके बॉडी में रहता है, और जब वो एडल्ट हो जाता है तो कुछ कंडीशंस की वजह से जो है इट कैन कॉज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज दैट इज नोन एज शिंगल्स. जो चिकन पॉक्स है और जो शिंगल्स है वो इंटरकनेक्ट है, ठीक है. जो शिंगल्स है वो भी एक चिकन पॉक्स की जो सिम्टम्स है वो शिंगल्स की भी सिम्टम्स है, इसी तरह कुछ होते हैं, ठीक है. जो डिफरेंट जो स्किन पे डिफरेंट जो वेसिकल्स है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है. तो शिंगल और जो चिकन पॉक्स है वो एक जैसे होते हैं, लेकिन सिंपली मैं आपको ये बताता हूँ कि बीच में बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया, ठीक है. अभी पहले वो बंदा जो था वो चाइल्डहुड में था, और उसके बाद जब वो एडल्ट हो गया, आई थिंक देयर इज 15 years to 20 years टाइम गुजर गया, तब वो वायरस ने अपना काम फिर शुरू कर दिया, ठीक है.
So this is known as quiescent latency latency. बीच में बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया. अगर मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल दे दूं, HIV वायरस जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है. फॉर एग्जांपल एक बंदे को HIV इन्फेक्शन हो गया, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ ही हिज इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग, तो वो वायरस एक डोरमेंट स्टेज में उसके बॉडी में रहता है, ठीक है. एक डोरमेंट स्टेट में उसके बॉडी में रहता है, ठीक है. एंड और वो क्या कर लेता है, वो इन्फेक्शन जो है, वेट अ मिनट, सॉरी, ओके. तो एक बंदे को HIV इन्फेक्शन हो गया और उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो वो HIV वायरस उसके बॉडी में रहता है, लेकिन वो एक डोरमेंट स्टेट में होता है, एक कंप्रेस्ड स्टेट, सप्रेस्ड स्टेट में होता है, ठीक है. और जब वो टाइम गुजरता है और धीरे धीरे से वो वायरस जो है अपना काम करता रहता है, और 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स के बाद सिम्टम्स अपीयर शुरू हो जाते हैं, ठीक है. ओके, तो उसको भी क्वाइसेंट लेटेंसी कहते हैं, ठीक है. बीच में बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया. तो देयर आर मेनी मेनी एग्जांपल, लेकिन आप सिर्फ इस दो एग्जांपल में अपनी जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लें. ओके, now there is intermittent latency. Okay, one is quiescent latency and the other is intermittent latency. तो इसमें एक डिफरेंस है, ठीक है. इंटरमीडिएट लेटेंसी जो है उसका एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ ट्रिपनोमा पैलिडम. ये एक बैक्टीरिया है और ये सेफाइलस कॉज करती है, ठीक है. सेफाइलस डिजीज कॉज करती है. ये किस तरह होती है कि वो हमारे जेनिटल एरिया पे डिफरेंट सोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. तो इसमें इस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल पहले में कुछ सोर्स प्रोड्यूस हो गए और तकरीबन 5-10 दिन के बाद वो सोर्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है. फिर तकरीबन 1 महीने 2 महीने के बाद फिर वो सोर्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है. जो ये उसकी सेकंड स्टेज होती है, ठीक है. उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाते हैं. एंड आफ्टर दैट देयर इज अ थर्ड स्टेज के तकरीबन 2 महीने 3 महीने के बाद, आफ्टर 2 to 3 months अगेन देयर आर सोर्स, ओके, एंड देन दे इरप्ट, ओके. तो उसकी थर्ड स्टेज होती है, ठीक है. तो ये इंटरमीडिएट लेटेंसी है. बीच बीच में जो है ये जो साइंस और सिम्टम्स है ये ख़त्म हो जाते हैं और फिर अपीयर हो जाते हैं, ठीक है. लेकिन इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना कि क्वाइसेंट लेटेंसी में लग गया, ठीक है. उधर सालों लग गए, देयर इज जो ईयर्स लग गए उसमें, लेकिन इस लेटेंसी में मंथ्स लगते हैं, ठीक है. मंथ्स लगते हैं, इवन ईयर्स नहीं लगते, लेकिन थोड़े टाइम कम लगता है, ठीक है. तो दिस इज नोन एज इंटरमिटेंट लेटेंसी. ओके, द सिम्टम्स सबसाइड्स, पहले अपेयर हो जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर अपेयर हो जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो है टाइम जो है वो वीक्स होते हैं, मंथ्स होते हैं. और कुछ इन्फेक्शन में 1 ईयर या 2 ईयर हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरता, ठीक है. तो आप यहाँ ये चीज़ याद रखें, ठीक है. और जो एग्जांपल है उसमें ट्रिपनोमा पैलिडम का जो एग्जांपल है उससे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. नाउ द टर्म इज द वायरुलेंस. The virulence refer to the degree or intensity of pathogenicity. Okay, so virulence क्या होते हैं, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसकी इंटेंसिटी, जो डिग्री ऑफ इंटेंसिटी और पैथोजेनिसिटी, तो जितना ज्यादा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरुलेंट होगा उतना ज्यादा उसकी पैथोजेनिसिटी होगी. एंड व्हाट आर वायरुलेंस फैक्टर, तो वो फैक्टर जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वायरुलेंस जो है वो इन्हांस होती है. फॉर एग्जांपल कैप्सूल्स है, पिलाई है, टॉक्सिन्स है, यही वायरस, यही कंपोनेंट्स होते हैं, यही वायरलेंस फैक्टर होते हैं जो हमारे बॉडी को, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं. और यही टॉक्सिन्स होते हैं, यही कैप्सूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है. सो दीज आर नोन एज वायरलेंस फैक्टर. ओके, व्हाट इज इन्वेसिवनेस, तो ये इन्वेसिवनेस, इन्फेक्टिविटी और पैथोजेनिक पोटेंशियल,
یہ بیسیکلی کریکٹرسٹک ہے ایک مائکرو آرگینزم کے. So invasiveness means the ability of microorganism to spread to adjacent or other tissues. ہمارے ساتھ ایک مائکرو آرگینزم اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی باڈی میں پھیلتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں اس طرح کے انزائمز ہوتے ہیں, اس طرح کے پروٹینز ہوتے ہیں جو ہمارے باڈی کے جو وائرس اور جو مائکرو آرگینزم کے اسپریڈ میں اس کی مدد کرتے ہیں, تو وہ جلدی جلدی اسپریڈ ہوتے ہیں, تو اس کو انویسو کہتے ہیں. یہ ایک کریکٹرسٹک ہے مائکرو آرگینزم کا. اس طرح کے مائکرو آرگینزم بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی جگہ پہ رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈفرنٹ پوزیشنز تک پہنچ جاتے ہیں. Infectivity is the ability of the organism to establish a focal point of infection. جو ایک جتنا انفیکٹیوٹی ایک مائکرو آرگینزم کی زیادہ ہوگی اتنا وہ انفیکشن بیٹر طریقے سے انفیکشن کوز کرے گا. Pathogenic potential refers to the degree that the pathogen causes damage. جتنا پیتھوجینک پوٹینشیل زیادہ ہوگا اتنا باڈی کے اندر اس کی ڈیمیج, باڈی کو ڈیمیج بہت زیادہ کرے گا, ٹھیک ہے. What is toxigenicity? So the ability of microorganism or pathogen to produce toxins. Different exotoxin or endotoxins are produced by the microorganism. تو اس کو ٹاکسیجینسٹی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک فارمولا ہے, آپ کو بار بار یہ آئے گا کہ انفیکشن زیادہ کب ہوگا اور کم کب ہوگا, تو اس کے لیے ایک فارمولا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس فارمولے میں ویلیوز ڈال لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انفیکشیس ڈیزیز کتنا سیویئر ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نمبر آف مائکرو آرگینزم معلوم کر لیں, اس کی وائرلنس معلوم کر لیں, اور اس ہوسٹ ریزسٹنس معلوم کر لیں, اور اس کو اس ویلیوز کو پٹ کر لیں, تو آپ کو انفیکشنس ڈیزیز کا ریٹ پتہ چل جائے گا کہ اس کی انٹینسٹی کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. Okay, there are two terms that are known as lethal dose and infectious dose. Okay, تو یہ دو terms بار بار آتے ہیں. تو lethal dose وہ ڈوز ہوتی ہے جو مائکرو آرگینزم کی وہ ڈوز ہوتی ہے جب وہ آپ کے باڈی میں اتنے مقدار میں اتنے پاپولیشن میں انٹر ہو جائے, so you can be killed or that individual can be killed by that microorganism. For example, اگر ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کے لیے, یہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر 8000 اسپورز ایک بیسیلس انتھراسس کا ایک پرسن انہیل کر لے, سو ہی کین بی ایزیلی کلڈ بائی دیٹ بیسیلس انتھراسس. اوکے, تو یہ لیتل ڈوز ہے. یہ 8000 اسپور جو ہے یہ لیتل ڈوز ہے ایک پرسن کے لیے بیسیلس انتھراسس جو وہ انہیل کرتا ہے, ٹھیک ہے. انفیکشیس ڈوز, اتنا ڈوز وہ انہیل کر لے, ٹھیک ہے, وہ انجسٹ کر لے کہ وہ ایک ایکٹیو انفیکشن کوز کر لے باڈی میں, تو اس کو انفیکشیس ڈوز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر اس گراف میں میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے, تو if I want to explain it, تو اگر آپ اس گراف کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے ساتھ یہ لیتل ڈوز ہے اور لیتل ڈوز 50 اور لیتل ڈوز. اس 50 کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ جو 50% لوگوں میں اس کو فار ایگزامپل پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, then after that I will discuss the 50 that what does this 50 mean. LD means lethal dose. Okay, so اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کون سا اسٹرین جو ہے یہ بہت زیادہ وائرلنٹ ہے, تو اس میں جو اسٹرین اے ہے یہ بہت زیادہ وائرلنٹ ہے, بیکاز جو فار ایگزامپل 30 اسپیشیز اگر باڈی میں انٹر ہو جائے, اوکے, سو اٹ کین کل 50% آف دا پیپل. فار ایگزامپل اس 50 کا یہ مطلب ہے, فار ایگزامپل ہمارے ساتھ 100% لوگ ہیں, ٹھیک ہے, 100% لوگ ہیں, تو اس میں 50% کو لیا گیا ہے, تو 50% people can be killed by that 30 microorganism. اس اسٹرین اے کا فار ایگزامپل اس اسٹرین اے میں ٹی بی بیکٹیریا ہے, ٹھیک ہے, مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس. اوکے, تو اگر یہ مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس اگر یہ فار ایگزامپل اسٹرین اے ہے, ٹھیک ہے, تو اگر یہ 30 سیلز ایک پرسن انہیل کریں, ٹھیک ہے, تو 100% میں 50 لوگ مر سکتے ہیں, مر جائیں گے اس بیکٹیریا کی وجہ سے, ٹھیک ہے.
और जो बाकी 50% है, ठीक है, वो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग होगी या कुछ अदर फैक्टर्स होंगे। लेकिन इस 50 का मतलब ये है एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने लोगों ने किया है, तो 50% लोगों के लिए को लिया था, तो इसको इसलिए 50 कहते हैं, ठीक है, 50 लिखा गया है। अगर आप स्ट्रेन बी को देख लें, फॉर एग्जाम्पल ये बेसिलस एंथ्रासिस है, ठीक है, तो अगर 50 स्पीशीज या 50 स्पोर्स इनहेल कर ले, सो 50% ऑफ द पीपल कैन बी किल्ड बाय दैट बेसिलस एंथ्रासिस। तो अगर आपसे अभी कोई पूछे कि कौन सा स्ट्रैंड वायरल है, तो इजीली आप कह दें कि स्ट्रैंड ए है, ये वायरल है, क्योंकि 30 स्पीशीज से भी बंदा मर सकता है विद इंस्टेड ऑफ 50, ठीक है। 20 स्पीशीज फर्क आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक स्पीशी भी फर्क आ गई, एक नंबर का भी फर्क आ गया, तो ये जो कम नंबर वाला है वो ज्यादा वायरल होगा बनस्बत, और यहाँ तो बी 20 का फर्क है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट वायरल वन, ओके। So this was the part A of part 1 of this video lecture, okay. So hope you have understand this very well. If you have any question related to these terms, you can ask me in the comment box. In the part 2 of this video, I will discuss the other terms, okay. So keep stay tuned and watch all the parts of this video, okay. Stay blessed. Thank you very much.